Hey Biotech champs, I'm Mohita. Welcome back to Groeva, your one-stop channel for biotechnology, life sciences and competitive exams like GATE, DBT, JRF, CSIR net. In the previous video, we have studied about reaction equilibria. Today, we are going to see about the ligand binding thermodynamics, a very important concept for competitive exams as well as for your understanding biochemistry and drug design. So, what exactly is ligand binding? A ligand is simply a small molecule consisting, it could be just a second. Ligand is a small molecule. It can be substrate, inhibitor, hormone, or any drug, right? That binds with a macromolecule, usually a protein or a receptor. So, binding reaction is stated here, which states that it can be any protein that is binding with ligands, which is giving us protein ligand complex, right? Then next comes the equilibrium binding constant. What is equilibrium binding constant? It is just opposite of Ka, that is our association constant, right? So Kd is equals to Pl divided by Pl complex gives us 1 by Ka, that is our association constant. तो जितना ज़्यादा हमारी बाइंडिंग एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, जितना कम हमारा Kd होगा उतनी ज़्यादा हमारी बाइंडिंग एफिशिएंसी होगी. एंड यूनिट्स क्या है इसकी? दैट इज मोलर, राइट? देन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ बाइंडिंग में एक रिलेशनशिप आता है फ्री एनर्जी एंड बाइंडिंग का, दैट इज डेल्टा जी नॉट गिव्स अस माइनस आर टी लॉन के ए. अगर हम के को हम रिप्लेस कर रहे हैं के डी से, तो वो माइनस एंड के ए हमारा रिप्लेस हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर टी लॉन के डी, राइट? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. नाउ अब अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है कि इट इज लेस देन जीरो, नेगेटिव में है, देन बाइंडिंग इज फेवरेबल एंड स्पॉन्टेनियस बाइंडिंग होगी, राइट? एंड वी ऑल नो दैट डेल्टा जी नॉट का एक और रिलेशन होता है, दैट इज एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के साथ, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है. एंड ये डिटरमाइन करता है एंथैल्पी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे या वैंडरवॉल इंट्रैक्शन होंगी या आयनिक इंट्रैक्शन होगी. ऑन दी अदर हैंड एंट्रोपी से हमें क्या पता चलता है कि कितना स्पॉन्टेनियस होगा वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना या कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होना. Now, binding isotherm क्या होता है? To describe this mathematically, we use the term theta, and this is the mathematical expression that is only ligand divided by Kd, that is the dissociation constant plus ligand, right? If ligand amount is equals to Kd, then theta will be 0.5. That means half of the sites are occupied. Now, this concept is important for drug dosage and enzyme kinetics, right? It tells us how much of the protein is actually occupied by the ligand at a given concentration. This concept is directly connects to the pharmacology because it determines how much drug is needed and to produce the effective response. There's the other concept. Now let's go a little deeper. Many proteins have multiple binding sites, right? अगर कोई प्रोटीन है उसकी मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होंगी. कैसे? मान लो ये एक प्रोटीन है, तो इसकी सिर्फ एक यहाँ पे साइट है, ठीक है? बट कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होती हैं. कैसे? एक ये हो गई बाइंडिंग साइट, ऐसे एक ये हो गई, एक ये हो गई एंड एक ये हो गई. तो जब मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स आती है तब हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज हिल इक्वेशन का. तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कितनी कोऑपरेटिव बाइंडिंग होगी नेक्स्ट वाली, वो डिपेंड करती है फर्स्ट बाइंडिंग के ऊपर. तो थीटा हम बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम अपना n को डिटरमाइन करेंगे. अगर n की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 है तो नो कोऑपरेटिविटी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
बट अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन पॉजिटिव कॉर्पोरेटिवली बाइंडिंग मेक्स नेक्स्ट बाइंडिंग ईजियर. जनरली हीमोग्लोबिन के केस में ये पता चलता है. अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है देन नेगेटिव कोऑपरेटिविटी होगी, मतलब बाइंडिंग विल मेक अनदर बाइंडिंग डिफिकल्ट. गॉट इट? So why is ligand binding such an important topic? Because it has direct relationship with the applications in biotechnology, medicine and bioenergy. Some of the examples are enzyme substrate binding, very common, drug receptor interaction pharmacology में, antibiotic antigen binding pharmacology, and in fact immunology में भी, oxygen binding to hemoglobin and myoglobin, metal ion bindings in protein and bioreactor designing में भी. To see, understanding ligand binding gives us the power to design better drugs, optimizing enzyme and engineer more efficient biological system. So to quickly recap, we learned that ligand binding is how equilibrium and Kd define binding strength, right? Kd का formula हमने पढ़ा, right? Kd हमारा inversely proportional है Ka से, right? Then the importance of binding isotherm. After that, cooperative binding through Hill equation and its wide applications. In the next video lecture, we will study about the membrane potential in brief. And thank you. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Groweva. Your support motivates me to make more such detailed and exam focused content. Also, drop your questions in the comment. I'll be happy to help you out with your doubts. Thank you for watching and see you in the next video for another important concept.